Good morning students, welcome to Commerce Camp Odisha. Today we will be starting with the remaining part of the most important chapter, that is directors. Directors रो हमें किछि portion काली discuss करथिलु. आज हमें देखिया director identification number रो qualifications and his disqualifications. ठीक अछि. Director identification number रो जेतिकी भी information सेडी provide करछि, that's very less with the perspective of examination. से खाली गुडे definition आगा कहिछि. बाकी सब जिंस किछि हेले कहिनी. That's why आमे तारो अलगा provisions आज discuss करिबा. माने तमे notice करिथिबो माने previous classes रो comparatively जिनस कौन जोड़ी कम कहूँ से इलाबोरेट करछि, जोड़ी इलाबोरेट करा होछि मु सेडी कम करछि. काहे कि इन द सेंस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ मस्ट क्वेश्चन. तमे देखिथियो बारंबार आसीछि, चारि थरे रिपीट हेछि क्वेश्चन ला. सो इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड सेडा को धरि कि से बहुत कम इंफॉर्मेशन सेडी प्रोवाइड करछि. बुझिला. काली मु डिस्कस करथिली सेक्शन 8 कंपनी रो जहां भी तीनटा पर्सपेक्टिव, तो से तीनटा पर्सपेक्टिव रो से आरटीपी क्वेश्चन रे गुथरे पचारछि. तो आरटीपी क्वेश्चन रे गुथरे पचारछि माने देयर आर हाई चांसेस दैट विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन. एंड पिलाने स्कैनर क्वेश्चंस देखु नांदी, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आरटीपी क्वेश्चंस देखिबो. दैट्स व्हाई मु आगा पढि के अथरे बुझै दोछि तमानकु. तो तमे जदि भल से सुनि दोछो, we will be covering MTP, RTP, workbook and scanner. चारटा जा जिंस एडी कवर अप होछि, तमे कंपेयर करके इन पचरी परियो. ठीक अछि, फाइन. प्लीज हेडिंग दियो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. आर ना कोन दिन दिन धना दिन कौन बोच रात रात नहीं. अब सीएमए बच्चों के लिए दिन रात एक ही है. बुझी पाल तो दिन नंबर आमर सेक्शन नंबर 153 रू नहीं 160 पर्यंत कवर हो. सेक्शन नंबर 153 टू 160. काली हमें देखते बेसिक इंट्रोडक्शन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रो. तो फर्स्ट लेख तार मीनिंग से खाली बैग रे टेक्स्ट बुक टा काढी के दे दबो. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे गोटे जिनसटी कही देख, no person shall be appointed as a director of the company unless he has been allotted a director identification number. माने को हेले पर्सन डायरेक्टर हेबा आगे ताको को जिनसटा अलॉट हेथियार अछि, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टा अलॉट हेथिबार अछि. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टा जिमती कि हमर कोन आइडेंटिटी कार्ड टा दिया अछि, सिमती कोन हमर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टा थाउछ. बुझी पाला. तो सी नंबर जहाँ भी अच्छी सेटा किए प्रेस्क्राइब करे हमको सी कोच देखो सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करूछ. लेखो यूनिक यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूनिक आइडेंटिटी नंबर allotted to every person who is a director or is interested to become a director or is interested to become a director. बुझी पालो. So unique identity number allotted to a person who is a director or is interested to become a director. बुझी पारछ. तापरे लेखो it's allotted by central government. It is allotted
allotted by the central government. It is allotted by the central government upon making application. Upon making application. Upon making application. तो एडा रहा आमर कौन सेक्शन नंबर 153 सेक्शन नंबर 153 माने एथरे से कौन कहला कि इंडिविजुअल जे कि इंटरेस्टेड माने कौन नेटफ्लिक्स देखियो नहीं डायरेक्टर हेबा को जे भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हेगिरी अच्छी सीए कौन करियो सीए application plus fees का दबा सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करियो से लोग को डिन नंबर अलॉट करियो डिन नंबर कौन करियो अलॉट करियो बुझी पाला ये जो एप्लिकेशन टा अच्छी आमर है हैशटैग कर एप्लिकेशन टा अच्छी application for din number तार फॉर्म टा पचाचे से गुरुतर एग्जाम रे application for allotment of din number is form DIR3 very good form DIR3 and this is applied electronically. This is applied electronically. एथरे से जहाँ भी इनफॉरमेशन आमर कही रिक्वायर्स अ फोटोग्राफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सब जिन जाक हायर लेवल रे तुमको क्वेश्चन आसो बट जानी कौन पे मुझे जदि हटके क्वेश्चन पचर अच्छी से जदि कहीदे तो तुम कह कौन रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन कहीकि लिखिपार है वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन कहीकि लिखिपार इन DIR3 आउट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख the din number so allotted will be valid for the lifetime of the applicant lifetime of the applicant allotted will be valid for the lifetime of the applicant and shall not be allotted to any other person and shall not be allotted to any other person.
नेक्स्ट होची आमर ए जो डिन नंबरटा दिया अछि सेटा एमति नै कि से पर्टिकुलर पर्सन को दियाला कि केते वर्ष पर एक्सपायर हि जिवो दैट्स वैलिड फॉर द लाइफ टाइम एंड आउ कागु सेटा अप्लाई होबनी सेकंड थिंग होची आमे अप्लाई कर देलु से अप्लाई कर देला डीआर 3 रे मु इंटरेस्टेड अछि डायरेक्टर हेबा पई मु को फॉर्म रे अप्लाई करनी डीआर 3 रे अलोंग विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मु अप्लाई कर देली तो सेंट्रल गवर्नमेंट केते दिन भीतर ताको अलॉट करर अछि 1 मंथ भीतर से कोन करियो अलॉट कर दबो ताको तो डिन नंबर अलॉटेड एथरे हैशटैग करके 2 लेख एटा हैशटैग 1 एटा होची सेक्शन नंबर हमरो 154 सेक्शन 154 तो एमती जदि सब जिन गोटे थर लिखि दबो तो कंफ्यूज हे जिवो तो सेटा होची हमरो कांसेप्टटा कि से एप्लीकेशन दबो सेंट्रल गवर्नमेंट ताको देई दबो कहि से एप्लीकेशन को फॉर्म रे दबो सेटा हम अलग रे लिखिलु एंड एबे सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी अच्छी सेक्शन 144 कोची द सेंट्रल गवर्नमेंट shall within 1 month the central government shall within 1 month from the 1 month from the receipt of the application 1 month from the receipt of the application co-application DR 3 from the receipt of application allot the director identification number allot the director identification number allot the director identification number to an applicant in such manner as may be prescribed एटा होचे हमर सेक्शन नंबर 154 तापर लिखो सेक्शन 155 देखो खाली सेक्शन नंबर से अलॉट करची बट जिंस गुडा को बेसी बड़ बड़ जिंस किछि से कहनी सेक्शन 155 रे से कहची no individual who has been allotted a DIN under section 154 shall apply for or obtain or possess another DIN. No individual who has been allotted a DIN under section 154 shall apply for or obtain or possess another DIN. तो सी ना अप्लाई करि परियो ना अलॉट करि परियो ताको हमें ना सी आउ को मींस रे ऑब्टेन करि परियो सो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट प्रोविजन ताको गुटे आगे डिन नंबर हे परियो से कहियो मते कोन पे मु ए गां रे थिलाळ गुटे डिन नंबर आउ से मु आगरे गुटे रिलेशनशिप रे थिलाळ को गुटे डिन नंबर एबे सेडा ब्रेकअप हैला तो आई नीड अनदर डिन नंबर तो सेडा हबन वंस दिया एच माने सेडा लाइफ टाइम वैलिड बुझि पालो आगे तो लिखो सेक्शन नंबर 158 सेक्शन 158 ओके देयर इज ऑल
एवरी पर्सन और कंपनी एटा टिके इम्पोर्टेंट मार्क करिवो एवरी पर्सन और कंपनी every person or company while furnishing every person or company while furnishing any written or information or particulars as required to be furnished under the act under the act to be furnished under the act shall mention the din in such written or information or particulars related to the director or contain any reference of any director or contain any reference of any director एटा होची स्टार मार्क करिवो इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर द इम्पोर्टेंट पॉइंट भितर और इम्पोर्टेंट जिंदी वीवीआईपी कोन है हां स्नेहा दरकार नहीं आमको से देनी आमे पचर कहीं हम सेक्शन रो कमी नहीं तो से देनी एडी तो देखो सेक्शन नंबर 158 रे से कौन कहूँ मु वंस कहि दोछि तापर नोट डाउन करो आमे गोटे कंपनी हिसाब रे किंबा गोटे पर्सन हिसाब रे वी नीड टू फाइल सम रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सब जिन जगह आमे फाइल कला कौन है से डिन नंबरटा आमे अलॉट करार अछि केतोळ अलॉट नहीं माने लिखिबार अछि सेडे लाइक मेंशन करार अछि केबे मेंशन करबा ना जदी से डायरेक्टर को रिलेटेड किछि अछि किंबा से डायरेक्टर रो रेस्पेक्टिव रे किछि रिटर्न डा कि फर्निश होछि इन्फॉर्मेशन डा किंबा से डायरेक्टर रो किछि पोर्शन माने इंटरफियरेंस अछि सेथरे माने मनर से कहूँ गोटे डायरेक्टर एति प्रॉफिट अर्न कला सेटा पे से किछि इन्फॉर्मेशन टा कोडी पब्लिश करूछि गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो से डायरेक्टर आगा खाली डिन नंबरटा पड़ेगा जदि कंपनी पूरा मिसेई किछि लॉटरी जितिला किंबा गोटे बड़ जिनसर इन्वेस्टमेंट रो तांकी किछि पाइचंदी आ गवर्नमेंट कहिछि से इन्फॉर्मेशन टा हमको दरकार तमे दियो तो समस्त डायरेक्टर रो कोन हबो डिन नंबरटा सेडी अलॉट हबो बुझी पारछ ना गोटे डायरेक्टर जदि किछि अलॉटमेंट होउछि किछि अचीवमेंट होउछि कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होउछि खाली से डायरेक्टर रो अलॉट हबो नले जदि कंपनी दोछि तो सब पूरा कंपनी रो जति कि जण डायरेक्टर्स अछंदी समस्तंगर अलॉट हबो बुझिला समस्त किछि डाउट अछि कहि पारियो को पॉइंट जदि डाउट अछि पचरी पारियो वी आर गोइंग स्लो बुझुछि ना स्लो अछि ठीक अच्छे देख एटा तो लॉ लैंग्वेज टा प्रोविजन टा तो एटार इजी वर्ड से लिख द डिन नंबर
the DIN number of each director, the DIN number of each director or all the directors, each director or all the directors is to be compulsorily mentioned wherever required. ଏବେ ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? The DIN number of each director or all the directors is to be compulsorily mentioned wherever required. तो सेटा law provision टा तारा simple words होची एडा बुझी पालो? Fine. Next heading दियो intimation of DIN number to the company. Heading दियो, no section number here. Intimation of DIN to the company. Intimation of DIN to the company. Intimation of DIN to the company. Like how every director functioning as a director, every director functioning as a director in one or more companies, on or before 30th June 2007, on or before 30th June 2007, and who has not yet intimated his DIN to such company or companies shall within 1 month of receipt of DIN, from central government shall intimate माने कौन जणेबो, intimate his DIN to the company or all companies wherein he is a director, wherein he is a director,
wherein he is a director as per form 3b form 3b गोटे जिनस मन रख DIN नंबर हूँ 3 letters वर्डटा तो we are using DIR3 ये जिनसा मन रख DIR3 is the form कौन है बुझीपार ना DIN मतलब जो 3 words 3 letters तो समय कौन से मन रखिपर आगे कौन कर 3b यूज कर अगेन सेम वर्ड तो से कौन कौच वर्ड्स रे बुझाऊँ देख एवरी डायरेक्टर किंबा फंक्शनिंग एज अ डायरेक्टर गुटे किंबा अधिक कंपनीज रे जे भी डायरेक्टर वाला काम करूचंती से माने कौन करिए ऑन और बिफोर 30th जून 2007 ऑन और बिफोर 30th जून 2007 and who has not yet intimated his DIN to such company जदि किए नुआ रे जॉइन होइछि किंबा आगरो जे भी डायरेक्टर थिला एबे से आउडे कंपनी रे जॉइन होचे डायरेक्टर हिसाब रे सी जदि ता कंपनी को जणैनी किंबा तार DIN नंबरटा देइनी से मानंगो से केते दिन भीतर दबो विद इन 1 month फ्रॉम व्हाट 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ DIN फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बुझी पाला माने ए जो प्रोविजन से कहि 30th जून 2007 हमर कंपनी से को ईयर रे आसिला 2013 रे आसिला तो सी ता आगे जो कंपनी जारे जॉइन होइथिबो से मानो कोन तोर DIN नंबरटा अलॉट होइथिबा 1 month भितर से कंपनी जाको तू जणे दाछ तू जदि 2013 पर जहाँ भी करूछ तो से सब जिनस जा कोन हबो ना आराम से DIN नंबरटा सेडी पळेबो बट जो जिनस जाको तू आगे देइनो 2013 पर तते अलॉट हैला 2013 पर अलॉट हैला से जिनसडा कोन करियो आराम से तांको कहि देबो विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ DIN number from the central government shall intimate his DIN to the company or all companies wherein he is a director as per form 3b बुझी पाला क्लियर डाउट अछि Our last provision lekho punishment for contravention section number 159 a section 159 punishment for contravention कोड़ा कॉन्ट्रवेन ए जो सेक्शन DIN को धरिकी किछि भी जदि कॉन्ट्रवेंशन होउची तो से केस रे पनिशमेंट कोन हो इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर अच्छा मेघना एडा बुझिला सिंपल वर्ड से लेके रचना बुझिला इफ एनी इंडिविजुअल or director contravenes any provisions related to director identification number अच्छा से इंडिविजुअल और डायरेक्टर कौन पे कहला एडी खाली डायरेक्टर कहथिले तो हेई थांदा कौन पे कहला इंडिविजुअल और डायरेक्टर जहाँ भी कोई परियो इंडिविजुअल ऊपर जदि राग लाइले ताको पेनल्टी पकेदा नहीं हां पकेदा इंडिविजुअल कौन पैसे कहला गोटे डायरेक्टर हेबा आगरे गोटे इंडिविजुअल को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलले आगे से डायरेक्टर हे परियो सेडा जदि अप्लाई न करिगी किंबा फ्रॉडुलेंट मींस रे अप्लाई करिगी किंबा अप्लाई करला परे जहाँ भी प्रोविजंस गुडा को फॉलो न करिगी जदि गोटे इंडिविजुअल अछि तो से इंडिविजुअल को भी ए प्रोविजनटा लागू हो जिवो किंबा गोटे डायरेक्टर अछि से डायरेक्टर कौन करछि दीडा DIN नंबर नहीं जाइछि किंबा तार DIN नंबरटा फर्निश करूनी किंबा भूल फर्निश करूछि किंबा जबा जगह से मना कर दोछि देबा पे तो ए सब केस रे कौन हबो से टाइम रे लेले पेनल्टीटा पड़े तो सेति पे से लिखिछि इंडिविजुअल और डायरेक्टर तो लेखा contravenes the provisions related to DIN such individual or director such individual or director shall be
shall be punishable with an imprisonment extending to 6 months or a fine of 50,000 or a fine of 50,000 or a fine of 50,000 or in case of continuing contravention a further fine extending to 500 per day बुझिपाल तो ये अंडरलाइन करिए 6 months imprisonment 50,000 फाइन आउ कंटिन्यूइंग पेनल्टी रे कौन हो कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन रे 500 पर डे किछि भी डाउट अच्छी डिन नंबर को धरिकी पचारि पारियो एनी डाउट सिली एली भाबिबनी जहाँ भी पचारि पारियो बिकॉज डिन नंबर कंटिन्यूअसली पचरा होछि एग्जाम रे दिस इज लॉ ऑफ डिहाइड्रेशन हाँ को नो डाउट स्वागत किछि डाउट अछि नो सुहाना तृप्ति वर्षा स्नेहू मेघना रुद्र एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट अछि स्नेहार डाउट अच्छी केते पानी पियर अच्छी दिन को नहीं रे लॉ क्लास रे 3 बोतल लॉ क्लास सरले 4 बोतल नहीं लॉ क्लास रे 4 बोतल लॉ क्लास सरले 2 बोतल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो छाड़ एबे लिखिए क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस के डायरेक्टर हेबा चाहूचे एडी फिल्म डायरेक्टर नहीं कंपनी डायरेक्टर के हेबा चाहूचे के नहीं अरे हेले एजा सब पढ़ियो नी एजा सब तुम पे पिला ने पढ़े बुझी पाछ त कष्ट दबनी तमे न देले से माने नबा पड़ियो क्वालिफिकेशंस लेखो क्वालिफिकेशंस तो देखिए हमें मैच करि परिया ना नहीं क्वालिफिकेशंस को qualifications to become a director लेख कंपनी एक्ट जहाँ भी अच्छे ना से किसी भी स्पेसिफिक मैंडेटरी प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करो हैला बेसिक प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करूची तमे देखि पारियो से टेक्स्ट बुक रे मध्य पूरा ऊपर ऊपर कहि दीची द कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्टर्स माने तमे भी एबे चाहिले हे जे पारियो सडनली गुड दिन इधर रास्ता रे चल चली जाउथिबो हैला सडनली गुटे लोकर जहाँ भी प्रॉब्लम हैला तमे जाई कि फट किना सॉल्व कर दो तो से कहयो रुद्र धरे तू आज मो कंपनी रो डायरेक्टर हैला से तळे तू आसी कि हमो पार्टी दो हैला ब्रो कोड there is also no mandatory share qualification as per the act please underline the word share qualification तो फर्स्ट पॉइंट से कह देला नो मैंडेटरी प्रोफेशनल
professional or academic qualifications. No mandatory professional or academic qualifications, or no mandatory share qualification. Share qualification माने कौन? शेयर होल्डिंग पैटर्न माने इनदी कोई परियानी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रे हमें किंदी कहउछु कि एतिकी परसेंटेज थिले आगे हमें कोई परिया कि सेमाना भितरे शेयर जहाँ भी सब्सिडरी रिलेशनशिप ता एग्जिस्ट करछ. So for becoming a director, no person is prescribed to have any particular professional qualification or no particular share qualification. He is not required to hold any percentage of shares. बुझिला? तो फर्स्ट पॉइंट होची एडा. फर्स्ट थिंग होची एटलीस्ट केते एज रहर अछि. एटलीस्ट केते हाउ मच? 18 years. At least 18 years. At least 18 years old. तापरे individual must be of sound mind. माने कौन? पागल नथिबो. बुझला? तो जो ओडिया टाइटल जहाँ था प्रेम पागल कौन पागल माने कंपनीज एक्ट रे कंपनीज रे जेतिके टाइप्स ने ओडिया फिल्म रे पागल रे सेतिके टाइप्स अछि. बुझला? तो से पागल ने नहीं एक्चुअली जे साउंड माइंड द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, द पर्सन हु कैन हैव रैशनल थॉट्स, द पर्सन इज नोन एज अ साउंड माइंड. नेक्स्ट लिखो कौन दिन थी तो सेटा तो अच्छी लिखी दियो सेटा. इंडिविजुअल मस्ट possess a DIN number. Very good Suhana, attentive. Then individual or director. मुदीड़ा जा वर्ड कौन पे लिख लिए एडी कहबे. इंडिविजुअल और डायरेक्टर must not have been convicted माने कौन? imprisoned. ब्रैकेट रे लिखो imprisoned. दीड़ा जा कष्ट वर्ड्स आगा बट एडा नॉलेज सेडा जानियो. convicted of a crime and sentenced to more than 6 months in a prison. 6 months in a prison. 6 मास रो अधिक से जेल जाय नथियो. बुझिला? and 5 years must have passed since the end of sentence. तो से कौन कहूँ इम्प्रिजन हेबा नहीं. जदि भी इम्प्रिजन होती 6 मास अधिक हेबा नहीं. जदि भी 6 मास कम इम्प्रिजन होती तो 6 मास कम इम्प्रिजन होता टाइम रो नहीं 5 वर्ष कंप्लीट होती 5 years. तो कंपनी से एज्यूम कर 5 years रे गोटे लोक हाँ ठीक ठाक हो जाइए. बुझला ना? बुझिपाल ना? इम्प्रिजन हो नथियार अछि. जदि भी होती तो कौन 6 months रो कम होइथार अछि. 6 months रो कम हेले मध्य केबे से एलिजिबल हो पारिबो ना? हाँ एंड ऑफ द सेंटेंस माने 6 months पर्यंत से थिला. 6 months पर जतो रिलीज हैला से डेट रो नै कि 5 years एक्सपायर हैला परे से कौन एलिजिबल हो पारिया. सुंदरी देन लेखा
the individual must not be कौन है बेड़ा very good must not be an undischarged insolvent स्नेहा ओडिया वर्ड कौन आ रहा undischarged insolvent the बढ़िया undischarged insolvent or have applied as an insolvent माने कौन जदि इनसॉल्वेंसी प्रोसीजर तुम जानथिबो जदि गोटे कंपनी पे करि पानी डेट्स गुडाक तो से निजे निजे जाइगिरी कौन हम कन्फेस कर देबे कि मो पाखे एते पैसा नहीं तो मोर एसेट्स मु सरेंडर कर दोची आई एम डिक्लेयरिंग माय सेल्फ एज एन इनसॉल्वेंट तो एसेट गुडाक रिकवर करिगी जहां भी अमाउंट रीपेएबल हे पारियो तो प्लीज अलॉट दैट अकॉर्डिंगली तो सीए जाइकी डिक्लेयर करला पारे केबे भी से डायरेक्टर हे पारियो किमा लोक ने ताको इनसॉल्वेंट कहि देला पारे मध्ये से केबेले डायरेक्टर हे पारियो बुझि पालो किछि डाउट अछि कार डाउट नहीं कार किछि वर्तमान पर्यंत नेक्स्ट लेखो द डायरेक्टर एते लेखनी डायरेक्टली लेखो must not be disqualified from being appointed as director by a court or tribunal by a court or tribunal by a court or tribunal तापर लिखा हेले कोर्ट जदि डिक्लेयर कर दोछि कि ए पर्सन इमोरल पर्सन इलीगल पर्सन फ्रॉडुलेंट पर्सन तो ताको केबेले को डायरेक्टर पोस्ट दिया होबनी तो सेडा केबेले हे परियन his relatives must not have any pecuniary माने होची मॉनिटरी सेडा होची लॉ वर्ड pecuniary relationship with the company or its subsidiaries or the relationship माने कोड़ा pecuniary relationship आगा the relationship must not exceed 2% must not exceed काटी की बी लिख दिया must not be greater than is equal to 2% of gross turnover or total income of the company टेक्स्ट बुक रे किछि दोनी पचर लाणो बड़ स्टाइल रे पचर दोछि एंड तमर क्वालिफिकेशंस हे लाले साइमल्टेनियसली डिस्क्वालिफिकेशन हेछि बुझिला बुझि पाछ ना his relatives must not have any pecuniary relationship with the company or its subsidiaries or the relationship must not be greater than is equal to 2% of the gross turnover or the total income of the company gross turnover और net turnover भितर डिफरेंस बुझुथिबो काहे गेले देर कोन सेटा ग्रॉस प्रॉफिट कोई परिया ट्राई करो
जनरल सेंस रे एवरेज गोटे ह्यूमन लाइक लेमैन लैंग्वेज रे जदि कहर अछि लेकोले ग्रॉस टर्नओवर माने पूरा पूरी हाथ को केते आसिला नेट टर्नओवर माने हाथ को केते बळका रहला बुझी पाछ ना एक्सपेंसेस पे ऑफ कर देलो एक्सपेंसेस इन द सेंस बाहर रो टैक्स पेमेंट कर देलो किमा आ कोडी किछि देबार अछि सेटा दे देलो से सब जिंस जा होचे नेट टर्नओवर बट से कोन कहला ग्रॉस टर्नओवर कहला बुझी पाछ ना लॉ लैंग्वेज रे होचे एटा किमा टोटल इनकम माने कोन सब जा मिसै गिरी इनकम ता तापर सेडा रो कोन माइनस होबा हमरो कोन माइनस होबा डीटी पढाइला एबे डीटी टोटल इनकम माने कोन ट्राई करो बुझिपारल तो कंफ्यूजन नहीं तो अब कंफ्यूज कौन पे हो कही तो डायरेक्टली हो जोर से पूरा कही तो ना 2% दबार नहीं माने देखो से कौन कहूँ सी मानुची कि रिलेटिव्स जी भी अच्छा डायरेक्टर को जहाँ पैसा मिले कथा मिले जदि से एक्स्ट्रा फायदा खाया चाहूँ तो से कौन करियो ता रिलेटिव्स थ्रू रे डिराइव करियो बुझीपार ना जेहेतु डायरेक्टर जड़े अच्छा तो रिलेटिव्स जदि से कंपनी रे इनवॉल्व होगी अच्छा तो आर रिलेशनशिप टिके अधिक हो कंपनी सहित अधिक से डिराइव करदेव हेले सी कौन कौन सी परमिट करनी कि को रिलेटिव रहा दरकार नहीं कि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मेंटेन करबनी माने पैसा देवार कि पैसा से गला कि से नेला एमती जिन हेनी जदि बा होची एमती ना कि रिलेटिव्स न थे किसी हो पार कह रिलेटिव्स किसी रही जाइए तो आम एज्यूम करचु कि लेस देन इज इक्वल टू 2% रहिले आमे तते कौन अप्रूव करिपारो गोटे डायरेक्टर कहिके से बस गोटे परसेंटेज तो कहि देछि प्रिस्क्राइब कर देछि माने देखे ग्रॉस टर्नओवर जदि हमर होछि 10 लाख रुपीस 10 लाख होछि हमर ग्रॉस टर्नओवर 2% केते 10 लाख रो केते 20,000 तो 20,000 तो सी कौन कौन जान ना तुम जहाँ भी रिलेटिव्स अच्छा से सहित आम कंपनी रिलेशनशिप जहाँ भी अच्छी से 20,000 रु अधिक होगा नहीं कि 20,000 भी होबार कथा नहीं 19,900 पर्यंत चलछि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप इन द सेंस कौन तो जदि तांकड़ो किछि गुड्स नौचु हैला गुड्स नौचु तांको दौचु किंबा लोन नौचु बुझीपार ना तो से जिन जहाँ नेबा हेनी कहीं बाहर तो बहुत लोग अवेलेबल था ना तो खाली से कौन पे नेबा तो से केस रे दीटा जिनस आमर प्रिवेंट हो पारे गोटे हूँ एक्स्ट्रा फायदा कर पारे डायरेक्टर सेकेंड थिंग हूँ खाली जे अच्छा डायरेक्टर रिलेटिव जाग खाली से जदि आम रॉ मटेरियल नेबार स्टार्ट करदा से ठकियार स्टार्ट करें से जिनसा प्रिवेंट हो पाए तो ये दुटा जिन प्रिवेंट करने कंपनीज एक्ट एमती कही एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर प्रिस्क्राइबिंग 2% से बस कही आई होप इट्स क्लियर बुझला किछि डाउट अच्छी कार ठीक अच्छे देख द डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स plus shareholders must all agree to the appointment must all agree to the appointment must all agree to the appointment last and important point the director must provide the director must provide written consent to act as director in form DR2 form DR2
खाता किसी आने ना क्लास पढ़ा आसछि देख रे केंदी पढ़ाइला क्लास से खाली शुणी मन रखी दो लिखिया दरकार ताको कह दियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉमर्स कैन पिट ओडिशा आईफोन किनिया जाछ देख तुम गोटे जिनस कही डिन नंबर टा को फॉर्म रे से अप्लाई करिवो DR3 बिकॉज 3 लेटर वर्ड टा किन मन रखियो एडी से कहूँ डायरेक्टर मो डायरेक्टर हेबा पे अग्री करछि कहि तो से कौन कहियो आई अग्री तो इट्स 2 वर्ड्स तो सेते पे DR2 इनदि कहि मन रखियो बिकॉज ए दिडा क्वेश्चंस आसुछि फ्रीक्वेंटली डिन नंबर कहि तो आई होप इट्स क्लियर कार किछि डाउट अछि तो पचरि पारियो नले वी विल बी स्टार्टिंग विथ डिस्क्वालिफिकेशंस से कौन कहलो टिके रो हाँ हाँ सबमिट करियो ऑनलाइन पोर्टल रे कंपनी को दब सेटा आमे अलगरे पढ़िबा सेटा कंपनी को केति जणेबो के दिन भितर जणेयो कि मते इंटरेस्टेड अछि से कहियो कि मो ए पार्टीज को रिलेटेड मीटिंग रे अटेंड करि पारिनी काहे गेले मो थ्रू रे होछि इमती बहुत जिंस अछि इनर प्रोविजन जागो से जागो सब प्रोविजन हैला तो डिस्क्वालिफिकेशन से पाखरे आगे लिखि दियो तमो इजी हबो अच्छा एटा लिखि भी लिखि देलो सब नोट डाउन कर देलो क्वालिफिकेशंस बुझिला समस्त को बहुत कम कम जिनस पढ़ा होची तो ट्राई करियो जो दिन रो कांसेप्ट से दिन सारी देबो बिकॉज तुमको अधिक टाइम मिलबोने एंड फर्स्ट एग्जाम जदि भलो गला तो सब एग्जाम बिंदास जीवो फर्स्ट ला लॉज सेटा तो कहूँ आ फर्स्ट एग्जाम जदि खराब गला बाकी सबुर मूड खराब हबो मूवी अडा लाउछ ना कोन तमन एसी ऑन ऑफ हो जा मते तमन आंसर करियो एबे ए हैला सेडा किछि नहीं कौन हबो हसचंदे हसी रहया दरकार ना डायरेक्टर टा एबे अपॉइंट हैला खुशी खुशी रे ताको कोन करिया हमें डाकिया ना मित्रो एसी ऑन करी डाकुछु ताको काट दा ना सेतुल रागियो कांदना हां मते को डिस्क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन कौन हबो देखी कयो आंसर्स जोर जोर से कयो नहीं फर्स्ट तारो साइमल्टेनियसली हां तो कहि दे खाली बायो डाली कहि दो जदी लेस देन 18 इयर्स तापरे अनसाउंड माइंड सुहानार फेवरेट अनसाउंड माइंड पागल रो न टिके नोट इन तापरे कोन हिथियो देबाळिया नै जेल पळैथियो सेटा देखो हां हां हैला ताको पठिता जे टिके सुन डी नंबर पॉइंट देखो टिके टेक्स्ट बुक रे पेज नंबर 440 पॉइंट नंबर डी से कौन कहिछि ऑफेंस इन्वॉल्विंग ए ऑफेंस इन्वॉल्विंग लिंक कटि गला आउथरे जॉइन करो अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जारो लिंक ता फेल हे जीची आउथरे टिके जॉइन करो
disqualified. Fine. ठीक अच्छे छाड़. Offense involving moral turpitude. A moral turpitude word is important. Offense involving moral turpitude. Offense involving moral turpitude. हैला एडा गुटे आ कोन जे ए पॉइंट को धरि के हम कोन कहया जदी ग्रेटर देन 6 मंथ्स कोन हेतिबो इम्प्रिजन हे जेतिबो तमे दि जण बहुत माड भय बोछ ग्रेटर देन 6 मंथ्स इम्प्रिजन हेतिबो आ कोन हेतिबो लेस देन 5 years completed from end of jail सिंपल वर्ड से जे लिखु छु तापर कोन हेतियो स्नेहा दबळे हे जेतियो insolvent किंबा applied to be insolvent ता पाखे पाखे लिखि दबो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन संग संगे पेजेस रे तापरे कोन हेतिबो disqualified by court जदी कोर्ट मना कर देला disqualified by court then his relatives having greater than is equal to 2% co-relationship कोडा कहिथिली pecuniary word ता मन अछि त रिपीट करो pecuniary relationship with the company so 2% of कोन सेडा gross turnover or total income 2% of gross turnover or total income दिन रो कोडा कहछो पेज 440 हां लास्ट 3 लाइन अच्छा हां he has been convicted by a court for any offense whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more he shall not be eligible to be appointed as director in a company माने एटा होची हां थैंक यू मन पकेलो लाइफ टाइम तार डिस्क्वालिफिकेशन होची जदी 7 वर्ष ताको जेल रे रखि दोछ 7 वर्ष जदी से जेल रे रही के आसिला तो कोन हबो लाइफ टाइम पे के पहले डायरेक्टर दे परबो बुझि पालो लिखि दियो सर सेडा बुझ नथिला ना आ कोडा थिला सेडा ना मु सेडा मिस कर देली ऑनलाइन मु अंडरलाइन करला देखि लिखि दियो पाखरे देखो 6 मंथ्स रु कम जदी हैला आली कहले 5 इयर्स एक्सपायर हेला कहले कोन हबो हां अपॉइंट हे परियो तुमको अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट रे से पार्ट आसीबो हे परियो सर पॉइंट आसीबो सेटा कोच सेडा मु कहिबी हैला डिस्क्वालिफिकेशन से अगेन कहबी सर चार्ट काटी देबो की इम्प्रिजनमेंट हेले केते मास जे हले कोन हबो केते वर्ष जे हेले कोन हबो से चार्ट हम काटी के दे देबो नेक्स्ट क्लास में से दीडा जे जिंसो कंपेयर कर दो एडी लिखि दियो जदी 7 इयर्स होची 7 इयर्स जेल देन लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तापरे कोन जदी बोर्ड और shareholders not agreed बुझि पाला तापर देखो अदर डिस्क्वालिफिकेशन रे मु अंडरलाइन करबी तमे से पाखर लिखि दबो पर हैला देखो
तो unsound mind, undischarged insolvent, adjudicated as an insolvent, convicted by a court for any offence not less than 6 months or a period of 5 years has it not elapsed from the date of expiry सब जिनसे जगह जदि imprisonment for a period of 7 years he shall not be eligible to be appointed as a director in any company. तापरे in an order disqualifying him for an appointment as director has been passed by court or tribunal जदि court disqualify कर दोची तापरे देखो important points. He has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him whether alone or jointly with others and 6 months have elapsed from the date last day fixed for the payment of call. एत्तिकी जिनस जहाँ भी अच्छी सेडारु पक्का केस लो क्वेश्चन गोटे आसीबो कोडारु कोडा मु कहूची एफ रु नेगिरी very important बहुत प्रकार केस लो क्वेश्चंस आसी परियो एडा सॉरीले मु क्लास टा एंड करबी आराम से सुनिबो बिकॉज़ ये तो इंपोर्टेंट टॉपिक तो मु एलाबोरेट करूची टिके भल से सुना. He has not paid any calls माने कोन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल थाउची हमरो कॉल मनी गुडा को कोन जो भी शेयर्स ऑफ द कंपनी वो भी कंपनी रे जदी से शेयर्स हेल्ड करूची तो सेडार कॉल मनी से पेमेंट करूनी कॉल मनी पेमेंट करनी either alone जदि तार निजर भी पेमेंट करनी आ कोन हिची सुनो भल से कोन कंसंट्रेट करे पड़े तापरे alone और jointly माने कोन सी along with other shareholders जदि होल्ड करछ along with other shareholders तो से माने जदि पेमेंट कर लेनी ये ते मानो पैसा दे दीची कि तो पेमेंट कर दे गई बट से भूली जाईची कि जो भी रीजन लागी जदि पेमेंट करिनी एंड 6 मंथ्स हैव elapsed हेले सी कहिथियो कोन 15th August अडकू थिला डेट टा लास्ट डेट थिला तारो 6 मंथ्स केते हबो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर जनवरी फेब्रुअरी 15th February हेला 15th February भितरे जदी से माने पेमेंट करि दोचंती तो ठीक अछि नाइ एले कहले कोन हबो से डिस्क्वालीफाई हिज से पर्टिकुलर सेशन पे से कोन हबो डिस्क्वालीफाई हिज. Is it clear or not? बहुत बड़ा पॉइंट था बट इजी पॉइंट था. सी एलोन हो जॉइंटली हो कॉल मनी पेमेंट करि पानी आ 6 मास एक्सपायर हेला से दिन. He has been convicted for offence dealing with related party transactions under section 188 at any time during the last preceding 5 years. Related party transactions माने होची कोन related party रो गोटे बड़ सेक्शन टा अछि जतरे कि से को एले जिंस लागि सेति के रिलेट हेकी थिबो माने बिजनेस रिलेशनशिप हो कि सेरो तार बहुत प्योर रिलेटिव हो किबा कोन से सेतरे इन्वॉल्व हेतियो बट कोइ नथिबो सिंती भी हो किबा से इनडायरेक्टली कंट्रोल करथिबा रिलेशनशिप हो अल्टीमेटली गोटे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रे से किछि ऑफेंस करला कोन करला ऑफेंस करला करिगी 5 वर्ष हेनी किबा सॉरी 5 वर्ष हेनी नै लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स भितरे से केबेले गोटे ऑफेंस करिछि रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188 सेक्शन ना हमें नेक्स्ट रे पढिबा हैला कमिंग क्लासेस रे आसीबो तमन बर्तमान को बुझला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस माने कोन जोथरे कि डायरेक्टर इनडायरेक्टली किबा डायरेक्टली कंट्रोल करथिबो से ट्रांजैक्शन सेतरे से किछि ऑफेंस करला भूल करला धरा पडियाला हैला केते दिन भितर लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स माने 5 इयर्स रो आगरे जदी किछि हेछि तो सेडा किछि नै 5 इयर्स भितरे माने अपॉइंटमेंट डेट रो लास्ट 5 इयर्स भितरे जदी किछि से भूल करिछि रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस then he will be disqualified. He has not complied subsection 3 of section 152. कौन थिला से subsection 3 of section 152? कौन थिला एजा सब लिखेबी लिखी थी ना लिखी ना कौन 152 3 लिखा है नहीं हो छाड़ लिखे सर. No person who is or has been a director of the company which has not filed financial statements or annual returns for any continuous period of 3 financial years. एटा भी बहुत important point. से कौन कोची financial statements किंबा annual returns माने गोटे company financial statements file करनी किंबा annual returns file करनी for any continuous period केते दिन continuous period of 3 financial years. से कौन कोइछ देखो और कोइछ एडा नले एडा कोडा गोटे फाइल न करले मध्य डिस्क्वालीफाई हि जिवो. दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन ऑफ फाइनल एग्जाम सीएमए फाइनल रे एडा बहुत थरे पचारछ
जदि गोटे कंपनी फाइल करनी तो जति भी डायरेक्टर्स अच्छे समस्त डिस्क्वालिफाई हो जिवे कौन कौन एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर हाउ मेनी इयर्स 3 continuous financial years 3 continuous financial years 3 continuous financial years has failed to repay the deposits accepted माने कौन पब्लिक रो किछि डिपॉजिट से माने नेउचंदी तो सेडा पेमेंट करि पारनांदी और पे इट्स इंटरेस्ट thereon इंटरेस्ट रीपेमेंट करनांदी और टू रिडीम एनी डिबेंचर रिडीम करनांदी on the due date or pay interest due thereon or pay any dividend declared and such failure to pay or redeem continues for केते वर्ष 1 year or more से कौन कौन कहला देखिला ना डिपॉजिट कहला इंटरेस्ट कहला डिबेंचर कहला इंटरेस्ट कहला डिविडेंड कहला केतरा जिंस हला डिपॉजिट इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 5 थिंग्स कौन कौन डिपॉजिट इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट डिविडेंड सब जगह डीडीआईडी इमती दीदी ओके तो से जिनसा पेमेंट करनी आ केते 1 year और मोर पर्यंत से जिनसडा चलची ही शैल बी eligible to be reappointed as a director of the company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the company fails to do so तो नो पर्सन से कहि से जो नो पर्सन नै ये सेडा एते पॉइंट्स को से लिंक करछ माने कोन जानछ ना 5 वर्ष हैला जे से केबेले रीअपॉइंट हे पारे किबा अपॉइंट हे पारे 5 वर्ष जे तार डिस्क्वालिफिकेशन दा चले लास्ट लाइन देखा अपॉइंट रीअपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अपॉइंट इन अनदर कंपनी से कंपनी हो अदर कंपनी हो जो हेले कंपनी रे जो हेले भी कंपनी रे 5 वर्ष जे से कोन हे पारे डायरेक्टर हे पारे को ऑफेंस करले डिविडेंड डिबेंचर इंटरेस्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट पेमेंट करिनी 1 year continuously किछि हेले से रेस्पोंड करले क्लियर where a person is appointed as director of the company which is in default of clause A or clause B he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of appointment एक clause गुडा को किछि ने एंड काटो एडा सेडी खाली ए जो लास्ट लाइन टा को मार्क करो माने गोटे पर्सन गोटे डायरेक्टर अपॉइंट हेछि रे गोटे लता नुवा डायरेक्टर आसीछि 6 मास हेले हेनी से आसीगिरी कंपनी कोन हेले भूल करला ताको हम डिस्क्वालिफाई कर देले हबो कि एबे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करूनी रिटर्न देलानी तो आपको हम डिस्क्वालिफाई करले हबो कि नाही तो से कोन कहूची गोटे डायरेक्टर जॉइन हेथिबा 6 मास भितरे कंपनी तरफ रु जदी किछि भूल भाल होची तो से डिस्क्वालिफाई हबो एंड मन रखो ता लागि जदी किछि भूल होची तो से डिस्क्वालिफाई हबो बट कंपनी थ्रू रे किछि डिस्क्वालिफिकेशन इनकर होची तो से केबे हेले कोन हबो डिस्क्वालिफाई हे पारे बुझुची किछि डाउट अछि In addition to the aforementioned, private companies can include other disqualification within their article of association if so wished. तो से कौन कहछि प्राइवेट कंपनीज तांके चाहेले डिस्क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस करि पारिए को थ्रू रे एमओए ना एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी करि पारियनी प्राइवेट कंपनी करि पारियो माने किन कहले छले कहले जदी गुडे कॉलेज अछि जनरली गवर्नमेंट कॉलेज रे रूल कोन तो यूनिफॉर्म न पिंदी आसले हम फाइन पको कि कोन कहले सुन दब बट प्राइवेट कॉलेज रे कोन यूनिफॉर्म न पिंदी आसले 5000 फाइन दियो से ड्रेस रो कॉस्ट आगा तमे दबो सेडी तो हबो कि सेडा हबोनी बट प्राइवेट कंपनी चाइले करि परियो काहेंगी तार आर्टिकल्स थ्रू से जहा ले मेंशन करले सेडा चलिबो को ठीक अछि थैंक यू सो मच होप बुझिला किछ डाउट अछि कार थैंक यू